Hello बच्चों, again welcome you in our YouTube channel Kavish Classes, and this is your YouTube teacher Gajendra Singh. Now today we will do some NCERT text question number 1.9 to 1.12. We discuss in this video lecture question number 1.9, 1.10, 1.11 and 1.12. So without wasting your time, let's get started. So we have a 1.9 question number 1.9. Give the significance of a lattice point. जो lattice point होते हैं उसका significance यहाँ पे हमें लिखना है और क्या significance क्या होता है lattice point का. So let's understand the lattice point. So let's take an example. Look, we have a unit cell. We have a unit cell, suppose. We have a unit cell, and these are the lattice point. These are the lattice point. There are 8 lattice point. Which represent the position of constituent particle of solids. तो ये जो मार्किंग है ये लेटिस पॉइंट है और लेटिस पॉइंट क्या शो करते हैं? इट इज शोज द रिप्रेजेंटेशन, इट इज द शो पोजीशन ऑफ constituent particles. So these are the constituent particles. These are the constituent particles. These constituent particles which may be ions, atoms or group of atoms, that is molecules. So इसको हम लिखते हैं इसकी definition को, इसका जो आंसर है significance. So the significance of a lattice point, the significance of a lattice point that क्या शो करता है? That each lattice point, in short LP, each lattice point shows position of these are the constituent particles which shows position of constituent particles. क्या शो करते हैं? जो लेटिस पॉइंट है वो शो करते हैं पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल which may be ions, atoms or molecules of a solid, which may be atoms, molecules or ions. So in short, lattice point shows the position of constituent particles of a solid which may be atoms, ions or molecules. तो ये lattice point है, इन पे ये constituent particles की पोजीशन होती है और ये constituent particles आपके ions भी हो सकते हैं और आपके atoms भी और group of atoms, that is molecules. Now we will discuss further question. Question is 1.10. Question: name the parameters that characterize a unit cell. We have to write the parameters which is characterize a unit cell. So we have a unit cell. This is unit cell. So we know that there are 6 parameters which affect the unit cell. So what
what parameters? Is length, and angles between two edges. जो यूनिट सेल के जो यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं, देयर आर 6 पैरामीटर, देयर आर 3 पैरामीटर्स एज लेंथ एंड रेस्ट ऑफ द 3 एंगल बिटवीन टू एजेस. लेट्स देयर आर 3 parameters. Suppose this is A, this is B, and this is C. There are 3 edges A, B, and C. Suppose now this angle, this BC, opposite to the A, opposite to the side A, angle is alpha. Opposite to the B, angle is beta, and opposite of edge length C, this is gamma. So we can show easily here. This is A, this is B, and this is C. Edge length C. Opposite to the edge length A, this is angle of beta. Opposite of the edge length B is angle of alpha. Opposite to the edge length A is alpha, and this is beta. Opposite to the C, edge length of C is gamma. So there are 6 parameters, edge length and angles. So right here, name the parameter that characterize a unit cell. So there are how many parameters? 6 parameters. There are 6 parameters which characterize a unit cell. So first, that is edge length, A, B, and C. Edge length ABC, AB, and C, and angles alpha, beta, and gamma. So these are the 6 parameters which is characterize any unit cell. Edge length ABC and AB and C, and angles alpha, beta, and gamma. So these are the 6 parameters which characterize a unit cell. Now move on next question. Question number 1.11. Distinguish between hexagonal and monoclinic unit cell. Second part is face centered and end centered unit cell. So in first part, answer hexagonal. And monoclinic. So we can distinguish between hexagonal and monoclinic with the help of parameters. With the help of parameter, we can easily distinguish between hexagonal and monoclinic. So in a hexagonal, edge length
is length A equal B but not equal C. If we talk about angles alpha equal beta 90 degree but gamma is 120 degree. तो ये 6 पैरामीटर्स हमने भी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। ये क्या करते हैं, किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं, यूनिट सेल को क्या करते हैं, डिफरेंट एक दूसरे डिफरेंट करते हैं। जैसे ये एंगल्स और ये जो एज लेंथ है ये डिफर करती है, तो उस हिसाब से यूनिट सेल डिफर करता है। तो हेक्सागोनल में हमने क्या पढ़ा है, हेक्सागोनल में जो एज लेंथ होती है वो ए और बी मीन्स this is A, this is B and this is C. And in hexagonal A equal B but not equal to C. So this is the relation between edge length in hexagonal. A equal B not equal C. But angle alpha beta 90 degree but C is 120 degree. This is 90 degree. This is 90 degree and this is 90 degree. But this is the 120 degree. So this is the hexagonal. Now we talk about monoclinic. So monoclinic is length. If we talk about in monoclinic on the basis of edge length, so edge length A equal B, A does not equal to B and does not equal to C. So all edge length will not be equal with each other. क्या होंगे, ये आपस में इक्वल नहीं होती इन monoclinic. If we talk about angles, so angles alpha equal gamma 90 degree. Alpha equal gamma 90 degree, but beta is not equal 90 degree. So this is the basic difference between monoclinic and hexagonal on the basis of parameters. On the basis of parameter, we can easily differentiate between hexagonal and monoclinic. So this is the answer. Now we move on next question. Question number: explain how much portion of an atom located at corners. And second part is body center of a cubic unit cell is part of its neighboring unit cell. इसका आंसर हम ऊपर इसको रब करके फिर इसका आंसर देखते हैं। आंसर 1.12 इसको मिटा देंगे। So again I repeat question. Explain how much portion of an atom located at corners in a unit cell. So हमें इसमें बताना है कि जो in unit cell how much portion of an atom located at corners, कितना पोर्शन जो कॉर्नर पे होता है वो क्रिस्टल के अंदर कितना पार्ट एटम्स का क्या रहता है, इंक्लूड रहता है, वो हमको बताना है। सेकंड पार्ट में बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल, बॉडी के सेंटर में कितना पार्ट किसका एटम्स का, मॉलिक्यूल्स और वी कैन से आयंस का कितना पार्ट उसके यूनिट सेल के अंदर रहता है वो बता। सो लेट्स हैव अ
This is a unit cell. We know that we know that in primitive or we can say central unit cell, those are also applicable for primitive unit cell and central unit cell. So we can write common definition. We know that in unit cell, in any unit cell, one upon eighth portion of an atom located at corners. तो कॉर्नर्स पे किसी भी यूनिट सेल में हम बात करें तो उसमें जो एटम्स होता है कॉर्नर्स पे, उसका कितना पार्ट, मतलब कितना पोर्शन उसके अंदर रहता है यूनिट सेल को, कितना है 1/8 portion of an atom located at corners. Now this is second part. Body center of a cubic unit cell is part of its neighboring unit cell. So this is at corners. These are the corners in a unit cell. So this is 1/8 part. This is 1/8 part, which is because these are the constituent particle at corners. These are the corners. 1/8 part. This also 1/8 part. This is 1/8 part. So all corners occupy 1/8 part in the unit cell. Now we discuss about body center atom. So in body center one part लिखेंगे, whole part of an atom, which is involved in a unit cell. तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी सेंटर जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है, इंक्लूड रहता है, उसका होल पार्ट क्या होता है उसमें अंदर यूनिट सेल के अंदर रहता है। तो यहाँ पे एक यूनिट सेल है, तो ये इसका पूरा पार्ट मतलब पूरा एक मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर सिचुएटेड है। तो हम बोलेंगे तो क्या इसका अगर बात करें हाउ मच पोर्शन, तो वन मॉलिक्यूल क्या रहता है इसके अंदर रहता है। कॉर्नर्स पे 1/8 पार्ट, बट बॉडी के अंदर फुल पार्ट उसका क्या होगा, इंक्लूड रहेगा। तो ये है इसका आंसर। कॉर्नर पे 1/8 पार्ट और एटम पे उस पे बॉडी सेंटर पे होल पार्ट ऑफ एन एटम विच इज इन्वॉल्व इन अ यूनिट सेल, दैट इज one molecule present in the body center. But if we talk about at center of the unit cell, so at center 1/8 part of the atom which is included in the unit cell. तो
तो ये आज के हमारे ये 4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे। तो अगले वीडियो लेक्चर में जो भी अगला कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए बने रहिए, और इसको अगर ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।